So, dear students, today we are to discuss the next tense of present tense, that is present perfect continuous, right? So, as we have already discussed, that perfect continuous tenses are those tenses which show the perfection of some task, some action, and then its continuity over a period of time, right? That we have already discussed exactly here. When we discussed about past perfect continuous, it was the perfection or completion of some task and then its continuity over a period of time in past. But now here we are going to discuss about it, that is in present. The same thing, completion of some task and continuity of it over a period of time, that is in present tense right now. So, uh, affirmative sentences, when we talk about the affirmative sentences of present perfect continuous, subject plus we use has or have. One of them we have to use, and then we put been, and then plus verb, first form, and ing. This is the minimum requirement, dear students. You have to keep in mind whenever we are talking about the structure or the pattern of the sentence. It is exactly like some mathematical formula that we are discussing. You have to keep in mind that the first place is of subject. Subject is the door of an action here in this case, but sometime if it is informative sentence that is not according to the, we should say that action sentences, it might be the thing about whom we are talking about. Here we have has plus have helping verb and been along with them, and then we put verb first form plus ing. That is a minimum requirement. Sometime in present perfect continuous tenses we use since and for, that is used as a preposition, and then in the end we put if it is fixed time, then we put since plus fixed time, and if it is duration, or we should say that a period of time, then we put for, and then we put that duration or period of time. If we are going to make some negative sentences, then we put not immediate after helping verb. Here in this part there is a mistake in composing mistake. Not should be immediate after has or have. You have to make it correction, you have to make it correct. It should be not immediate after the verb has, have. It should not be here in after been, right? Whenever you are going to make the negative of some sentence in which some helping verb is present, it is rule that immediate after the first helping verb you have to put not, and then it would turn into negative sentence. Here it is composing mistake, we can't correct right now here. Ing form and then interrogative, when we are going to make interrogative and it, if the sentence consists of some helping verb, here's also a general rule that helping verb should come in the beginning, in the start, and then it turns to be interrogative. That is simple interrogative that start with we should say that helping verb. Subject plus been plus verb ing, and wh mean the interrogative that start with where, when, why, how, what, and who, and like these words. These are called interrogation words. In simple way we can call them interrogation word. And then we put has, have, helping verb, then subject plus been plus verb, first form ing. First form of the verb plus ing, that is also called a present participle, right? We also know that. Then there is another rule that is very important, where we have to put since and where we have to put for. We have already discussed in the previous past perfect continuous tense. Once again, we are going to discuss right now in this part. Since is used with a fixed time, like Monday, October 2019, we should say that 6 o'clock, evening, morning, these are fixed time. But when we are talking about duration, a period of time, specific duration, then it is for that we are going to use. For example, here is 5 minutes, 10 hours, 6 days, 10 months, 5 years. For it we can have a simple formula where to use since and where to use for. If you are having the we should say that exact names of the units of time, then it definitely means for duration of time. For example, if there is in some sentence minute, in this there is some sentence second, there is some sentence if and it uses hour,
it uses day, night, it uses year, month, week, are like these words that are belonging to the units of time. It means that that would indicate towards, we should say, for, and that is a duration of time. So in duration of time, when that is mentioned in the sentence, that will be for. And if it is a fixed time, then it will be since, that we have to use in the sentence. Another thing is that in perfect continuous tenses, we don't have passive voice. We don't use passive voice in perfect continuous tenses, and we use only active form. But you have to also keep in mind some other thing too. That is, this part, this pattern of the sentence is the minimum pattern of the sentence. Sometimes we also need subject plus has have plus been plus verb first form plus ing. Sometime if there is transitive verb, we might need object. So if there is an object in the sentence, then the pattern will be subject plus has have plus been ing form verb and plus object. And sometimes it happens that there might be some adverbial too. Adverbials are those part of the sentences, those words and phrases which describe some action. We should say that in extra, or we should say that they qualify a verb, but they become the extra part of the sentence. They are the extra information that they are providing about some verb, or sometime about an adjective. So you have to keep in mind all the time that sometime we have to put adverbials too in the sentences, and normally adverbials are put in the end of the sentences, or if you are going to place them in the beginning, that might be, but with a comma you have to place, or sometime it may change their position before the main verb they come, or some other position too. But normally, or in general, if we are talking about the adverbials, they are put in the end of the sentence. So this type of pattern, or this thing that we are going to describe here, that goes towards the minimum requirement of a sentence. If there is intransitive verb, of course then we will stop our sentence on verb first form plus ing. But if there is some transitive, then there might be an object after ing form. And if there is time and duration mentioned, then since, for, uh, we would choose, and then we would definitely mention that time or duration of for the sentences. Then we come to words. We should say that the sentences that are for translation for practices. So we come to words that right now. First sentence is मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. अब हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट सब्जेक्ट हमने माइंड में रखना है. उसके बाद फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव बीन. आपको पता है कि हैज़ हम यूज़ करते हैं किसके साथ? ही, शी, इट के साथ. और अगर आई, वी, यू और दे है तो उसके साथ हैव लगाएंगे. तो ये बन जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और वेटिंग फॉर यू, और उसके बाद फिर आगे सिंस. सिंस नहीं आएगा, सॉरी, दैट विल बी अ ड्यूरेशन. यानी मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एग्जैक्ट यूनिट ऑफ टाइम, यानी सेकंड से आप स्टार्ट करें, सेकंड, मिनट, और उसके बाद घंटे या घंटा, और इसी तरह से फिर आगे हम बात करते हैं दिन, दिनों, रात, रातों, या फिर इसी तरह से हफ्ता, हफ्ते, इसी तरह से महीना, महीनों, माह, या इस तरह के अल्फाज, या फिर इवन उसके बाद साल, सालों, या इस तरह के अल्फाज आते हैं जो कि यूनिट ऑफ टाइम से एग्जैक्टली रिलेटेड हैं और उर्दू में एग्जैक्टली यूज़ किए जा रहे हैं. तो इट मीन्स के वो क्या बनेगा? ड्यूरेशन की तरफ इंडिकेशन जा रही है, यानी उसमें आप फॉर लगाएंगे. सो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज preposition फॉर. I have been waiting for you for 2 hours, right? नजमा गुज़श्ता 5 साल से बागबानी कर रही है. तो ये बन जाएगा नजमा हैज़ बीन गार्डनिंग. बागबानी के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग. नजमा हैज़ बीन गार्डनिंग फॉर लास्ट 5 ईयर, या फॉर प्रीवियस 5 ईयर्स. ठीक है, तो गुज़श्ता 5 साल, ये भी ड्यूरेशन बनता है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वो ईद के लिए फरवरी से चीज़ें ख़रीद रहे हैं. ये बन जाएगा ही, सॉरी ये प्लूरल है तो दे आ जाएगा. दे हैव बीन परचेजिंग गुड्स. गुड्स चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. दे हैव बीन परचेजिंग गुड्स फॉर ईद सिंस फेब्रुअरी.
तो अब फरवरी जो है ये ऑफ कोर्स यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, तो ये मेंशन करता है कि ये फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हम फिर फॉर इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम डॉक्टर से दवाई लेते रहे हैं। अब इसमें देखें टाइम या ड्यूरेशन साथ नहीं है, लेकिन अब इसका डिफरेंस हमने कैसे देखना है। इसका डिफरेंस हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेते रहे हैं। लेते रहे हैं का मतलब है कि एक रूटीन है और परफेक्शन भी है, यानी कंप्लीशन ऑफ टास्क भी है। और अगर ये होता खाली सिर्फ ये लिखा होता हम डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस टेंस में चला जाता, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक पार्ट होता। लेकिन यहाँ पर दवाई लेते रहे हैं, ते रहे हैं का कॉम्बिनेशन है, तो इट मीन्स कि ये है तो यही परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन यानी या फिक्स टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम ये कहेंगे वी हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर। और फिर अगर दुश्मन खतरनाक हथियारों से हमला करने की तैयारी करता रहा था। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, तो लॉन्ग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की स्ट्रेटजी मैंने आपसे डिस्कस की हुई है कि सबसे पहले आपने देखना है कि अगर क्वेश्चन है अगर आपको सिंपल क्वेश्चन समझ नहीं आ रही तो आप उसको पहले सिंपल में चेंज कर लें। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है तो हम पहले सिंपल इसको बना लेते हैं, दुश्मन खतरनाक हथियारों से हमला करने की तैयारी करता रहा था। अब ये भी इसी तरह से इसमें फिक्स टाइम या ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन स्टिल करता रहा था है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पे होता कर रहा था तो ऑफ कोर्स ये उसमें चला जाता किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। अब ये सेंटेंस जो है ऑफ कोर्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है, और अगर हम इसको इसमें चेंज करना चाहें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो खतरनाक हथियारों से हमला करने की तैयारी करता रहा है होगा। ठीक है, तो अब हमें इसको दोनों तरह से ट्रांसलेट कर देते हैं। हम ये कहेंगे द एनिमी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग टू अटैक विद डेंजरस या लिथल वेपन्स। अब इसका क्वेश्चन बनाने तो ये बन जाएगा हैज़ द एनिमी बीन प्रिपेयरिंग टू अटैक विद लिथल वेपन्स, राइट। और अगर था के हिसाब से करेंगे तो फिर ये वाज वो आ जाएगा, सॉरी हैड बीन आ जाएगा। हैड द एनिमी बीन प्रिपेयरिंग टू अटैक विद लिथल वेपन्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाएगा, हैड स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर करता रहा है तो फिर हैज़ यहाँ पर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट है, वो पिछले 2 हफ्तों से बाकायदगी से कुरान की तिलावत कर रहा है। अब ये भी लॉन्ग सेंटेंस है, तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर उर्दू फिक्रे के आखिर में जाएंगे जो कि वर्ब होता है कुरान की तिलावत करना, राइट। इसकी तरफ फोकस करेंगे जहाँ पे हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो हम देखेंगे वो पिछले 2 हफ्तों से बाकायदगी से कुरान की तिलावत कर रहा है, ये बन जाएगा ही हैज़ बीन रिसाइटिंग द होली कुरान। अब द होली कुरान इसमें ऑब्जेक्ट है, रिसाइटिंग जो है वो क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब। ही हैज़ बीन रिसाइटिंग द होली कुरान रेगुलरली फॉर लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से। ठीक है, तो अब इसमें एडवर्बियल्स भी हैं, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, और उसके साथ साथ बाकी पैटर्न ऑफ कोर्स जो मिनिमम पैटर्न है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट एडवर्बियल्स और ऑब्जेक्ट भी मौजूद हैं, और ड्यूरेशन और उसके साथ सिंस या फॉर का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, वो भी मौजूद है। लोग पिछले कई सालों से यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। अब इसमें भी इसी तरह से आप देखेंगे, लोग पिछले कई सालों से यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। पीपल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, पीपल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, इसमें हम साथ लगाएंगे द पाकिस्तान डे, इसको हम कहते हैं द पाकिस्तान डे फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, पिछले कई सालों से। पीपल हैव बीन सेलिब्रेटिंग द पाकिस्तान डे फॉर लास्ट several years, for last many years, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। So this part of tense is complete, and I think you have got it very thoroughly, very well. Now you should have some question session right now. You might ask me some question if you want to know some question.